हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है, क्या ये दोनों एक ही हैं, इनमें से ज्यादा नुकसानदेह कौन सी होती है और इन दोनों में हम फर्क कैसे कर सकते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आज की नशिस्त का हमारा मौजू है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। आज के लेक्चर में हम आपको इसके बारे में आगाह करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी मिस इन्फॉर्मेशन की। मिस इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड विदाउट द इंटेंशन ऑफ काजिंग हार्म। सो आई मीन मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉल्स होती है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन हमारा उसमें इंटेंशन जो है उनको नुकसान पहुंचाने का नहीं होता, इरादा नहीं होता। इट कैन spread unintentionally or by mistake and can include rumors, false statistics, urban legends. रूमर्स क्या हैं? अफवाहें डिफरेंट अपने अपोनेंट्स के बारे में, अपने दोस्तों के इवन और अपने अपोनेंट पार्टीज के बारे में, फॉल्स स्टेटिस्टिक्स जिसमें हम ऐसे अदाद-ओ-शुमार पेश करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करते हैं। देन अर्बन लेजेंड्स, और अर्बन लेजेंड्स में भी इज अ न्यू टर्म फॉर यू, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड अर्बन लेजेंड, समटाइम कंटेम्परेरी लेजेंड और मॉडर्न लेजेंड और अर्बन मिथ और अर्बन टेल इज अ genre of folklore comprising fabulous claims or stories circulated as true, especially as having happened to a friend of a friend or a family member, often with horrifying, humorous or cautionary elements. यानी हम कहते हैं ना कि मेरे दोस्त के दोस्त ने ऐसा कहा था, वो हमारी फैमिली मेंबर किसी ने ऐसा कहा था, so if they tell the stories about what happened what happened with them in a fabulous way or in a horrifying way or in a humorous way, we call it urban legends. So urban legends are also kind of misinformation because mostly they are fabulous, they are rumors, they are false statistics maybe, or they are inaccurate information or false information. And then a tsunami of misinformation flooding across social media platforms. The term infodemic is devised to outline the harmful effects of extensive dissemination of information, misinformation on several media platforms. Like pandemic is of course the is the severe situation of any caused by any disease, but infodemic is it's just like a disease, like the demic or pandemic of information, which is of course misinformation or disinformation. So this term has recently been coined to look into the tsunami of misinformation flooding across various media, especially social media platforms, to misguide the people or discredit the people. So this term has become very common when we talk about misinformation. And then let's look at some examples. हम कुछ examples की बात कर लेते हैं जी. We humans as storytellers tell our friends something we heard on TV or saw on social media that wasn't really true. एक एग्जाम्पल है कि जो हम अपने दोस्तों को कहानियां सुनाते हैं, बताते हैं, और वो कहानी हो सकता है हमने किसी ड्रामे में देखी हो, किसी मूवी में देखी हो, या किसी सोशल मीडिया पे हमने शेयर की हुई देखी हो. If you are spreading around information that is wrong, but you don't know it's wrong, then you are, well, technically spreading misinformation. And you need to be aware about that. I mean, if you are spreading some sort of information which is, of course, not correct, but it's wrong, but you don't know that it's wrong, then you are, well, technically spreading misinformation. You are spreading, you are doing misinformation kind of phenomena. Likewise, say a party starts at 8, a बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, सादा सी, कि फर्ज करें एक पार्टी है, वो 8 बजे शाम को शुरू होनी है, बट यू फॉरगेट और मिस रेड द इन्विटेशन एंड टेल योर फ्रेंड्स इट स्टार्ट्स एट 9 PM, लेकिन आपने मैसेज सही तरह से पढ़ा नहीं या इनविटेशन को सही तरह से देखा नहीं. आप मैसेज भूल गए या आपने इनविटेशन को मिस रेड किया, तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि पार्टी 9 बजे शुरू होगी. यू आर सप्लाइंग देम विद मिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज आपका इंटेंशन नहीं था उनको गलत बताने का, लेकिन बताया आपने उनको गलत बिकॉज you forgot or you misread the information or invitation. डिसइंफॉर्मेशन क्या है जी?
Disinformation refers to deliberately false or misleading information that is spread with the intention of harming, causing harm or manipulating people's opinions, attitudes or behaviors. So जो thin line है, जो difference है, वो इंटेंशन का है, यानी डेलिबरेटली इरादतन जानबूझकर जो झूठी या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है उसे डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं. इट कैन बी स्प्रेड विद अ वैरायटी ऑफ medium as a one, or media of course as a plural, including social media, news articles or propaganda, in the form of course gray, white or black. For example, let's go back to the earlier example. I mean party वाले example की बात करते हैं, आपको समझ आ जाएगी. Now if you know a party starts at 8 p.m. but tell your opponent it starts at 9 p.m. because you want them to look foolish, you are supplying them with disinformation. Same party अगर 8 बजे शुरू नहीं, लेकिन आपको पता था कि वो 8 बजे शुरू नहीं, लेकिन आपने जानबूझ के इरादतन डेलिबरेटली विद इंटेंशन अपने अपोनेंट को बताया कि वो 9 बजे शुरू नहीं, ताकि they miss some of the parts of the party, some segments of the party, and they look foolish and stupid. So it means you are not doing misinformation, no, rather you are supplying them with disinformation. Key difference क्या है जी misinformation और disinformation का? The key difference between two of them is intent behind sharing of information. Misinformation can be shared innocently without knowing consequences, while disinformation is shared with the purpose of deceiving or manipulating others. In other words, हम ये कह सकते हैं कि intention बुनियादी तौर पे वो चीज़ है जो किसी false और inaccurate information को misinformation या disinformation बनाती है. जब आपका intention नहीं है, आपका इरादा नहीं है, deliberately आप किसी information को to harm someone नहीं फैला रहे हैं, तो उसको misinformation कहते हैं. But if you are doing this with intent or intention deliberately to harm someone, to deceive someone, to make someone look stupid or foolish, then it is called disinformation. Consequences क्या हैं जी misinformation और disinformation के? Both misinformation and disinformation can have serious consequences, including harming reputations. So they harm the reputation of institutions, individuals, organizations, and even countries, of course, influencing public opinion. और मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन से हम राय आमा को मुतासर करते हैं, और अगर वो फैक्चुअल ना हो तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बददियांती है, क्योंकि राय देना, किसी की राय को मोल्ड करना और उसको मैनिपुलेट करना इन द फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बददियांती है. सो वी नीड टू बी केयरफुल इफ वी आर molding or influencing or having impact on the public opinion of the people. We need to be factual, we need to be honest, we need to present full frame or full picture to them so that they can make their informed public opinion, and even causing physical harm in some cases. And बाज औकात जब हम लोगों के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं तो they become the victim of physical harm or physical violence even in some cases. Therefore it's important to critically evaluate information. यानी इसका इलाज क्या है कि जब आपके पास कोई information आए, before sharing it, and to seek out reliable sources of information, और उसको देख लें. और जो इस्लाम का बुनियादी असूल है कि जब तुम्हारे पास कोई मालूमात आए, कोई information आए, तो उसको आगे शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक कर लो कि क्या वो दुरुस्त भी है या नहीं. मेरे ख्याल में अगर हम इस पे अमल करेंगे तो हम मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का जो फ्लड है उससे अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं. देन चैनल्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन. Misinformation and disinformation are typically disseminated through various forms of media, including newspaper, radio, television, word of mouth. जो मैंने एग्जांपल पार्टी वाली दी, we tell stories. I mean, we are storytellers. I mean, human beings are storytellers. So we always like to tell stories. But if we tell stories based on disinformation and misinformation, so we call it spreading misinformation and disinformation vis-a-vis word of mouth. And then internet, of course, is one of the leading source of tsunami of misinformation and disinformation, especially Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, and other platforms. So we need to be careful when we come across information. We need to check it and cross-check it and look critically into the sources who are sharing or disseminating that information. And then these are the sources: propaganda techniques in the world war, misinformation and disinformation, detecting fake with the eye and artificial intelligence, and then
communication theory, origin method, and uses in mass media. These are further readings. I hope they will help you to better understand misinformation and disinformation. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा. अगर पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा. अगर आपके कोई पॉइंट्स हों, कोई क्वेरीज हों, कोई confusion हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें. I will respond to them. Through that we can learn from each other. We can form an informed community with which can agree, disagree, and learn how to agree to disagree. Take care.